हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रोजो ट्यूटोरियल्स। तो आज आम हिस्ट्री ऑनर्स रो 2023 रे आसथिबा 5 नंबर सेमिस्टर रो DSE 1 जोंटा कि ओडिशा हिस्ट्री थिला से विषय आज आम आलोचना करिबा। चलंतु प्रथम क्वेश्चन देखिबा। एठारे कोन लिखा छै देखंतु, आंसर ऑल क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक by choosing the correct answer from the given alternative। तो ये कही कि जे ठीक आंसर टी को बाछि एठारे उत्तर दियंतु बोली कहूछि हला। तो चलंतु प्रथम क्वेश्चन अछि देखंतु, व्हाट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ कलिंग अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड प्लिनी। कोन कहि छी, What was the ancient capital of Kalinga according to Mahabharata and Pliny? यार सठिक आंसर कौन? दंतपुर। दंतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि? According to Dex, the stealing of jewels of Ashoka by the Nagas of Kalinga proved him to invade Kalinga। सठिक आंसर है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 12th year of his reign Kharavela defeated the Magadha king Dex। In the 12th year of his reign Kharavela defeated the Magadha king Dex। सठिक आंसर कौन हम? सठिक आंसर हम बृहस्पति मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, हु वाज द फाउंडर रूलर ऑफ द माथर डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर रूलर ऑफ द माथर डायनेस्टी। सठिक आंसर कौन हम? शक्तिवर्मन। सठिक आंसर कौन हम? शक्तिवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ भौमकरस। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ भौमकरस। यार सठिक आंसर हम गुहे सभर्क पाटक। गुहे सभर्क पाटक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट नॉन रूलर of Samavanshi dynasty। Who was the last known ruler of Samavanshi dynasty? Right answer कौन होगा? कर्णदेव। Next question, who built the temple of Ananta Vasudeva? Who built the temple of Ananta Vasudeva? यार सठिक आंसर कौन? चंद्रिका देवी व चंद्रिका। Next, when did the coronation of Kapilendra Deva take place? When did the coronation of Kapilendra Deva take place? सठिक आंसर कौन होगा? 1435 1435। नेक्स्ट क्वेश्चन, who laid the foundation of By dynasty in Odisha? Who laid the foundation of By dynasty in Odisha? सठिक आंसर कौन? गोविंद विद्याधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी? खंडगिरी एंड उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर वाज द ग्रेट हब ऑफ डेक्स। खंडगिरी एंड उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर वाज द ग्रेट हब ऑफ डेक्स। सठिक आंसर हम जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स were being employed for the purpose of singing and dancing। यार सठिक आंसर हम नर्तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्स was the great city port of Matharas। Dex was the great city
port of Mathura. আর সঠিক आंसर হব দন্তপুর। ओके तो हम पार्ट 1 टा डिस्कशन कर सारे पार्ट 1 सारी सारे नेक्स्ट को जीव पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 कौन अच्छे देखो आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विदिन 2 to 3 सेंटेंस इच। आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विदिन 2 to 3 सेंटेंस इच। एथिमध्यरु 8टी क्वेश्चन रो 8टी प्रश्न रो उत्तर लेख ता केतोटी सेंटेंस मध्य रहितबो 2 बा 3टी सेंटेंस मध्य रे होइतबो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंदो नेम टू टेक्स्ट दैट रेफर टू कलिंग। नेम टू टेक्स्ट दैट रेफर टू कलिंग। देन where are Ashoka inscription located in Odisha? Then to which royal dynasty Kharavela belonged to and what was its capital? Then who was the founder of Ganga? When did it begin? Next चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the first female ruler of Bhomakaras? Whose devotees was she? Next question देखो according to Puranic copperplate grant who were the kings defeated by Chodabanga Deva in 1112 AD? 1112 AD. Next question who started the construction of Lingaraj temple and who completed it? The next question name 2 outstanding rulers of Ganga dynasty. Next question when did the independent existence of the Hindu kingdom of Odisha come to an end? Name the ruler. Next question name 2 important urban center of ancient Odisha. Name 2 important urban center of ancient Odisha. तो यहाँ पार्ट 2 रो समस्त क्वेश्चन थिला। ओके चलो हम पार्ट 3 को आलोचना करिबा। पार्ट 3 रे कोन अछि राइट नोट्स on any 8 of the following within 75 word each. ओके समस्त क्वेश्चन रो बा एथि मध्यरु 8 टी क्वेश्चन रो आंसर लिखंतु जाकी 75 टी वर्ड रे रहिथिबो। तो प्रथम क्वेश्चन कोन अछि हिस्टोरिकल जियोग्राफी ऑफ कौशल। देन हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रूल ऑफ माथुरा। Next art and architecture under Samavanshi. Next Ananga Bhimadeva III war with Kalachuri. Next Pratap Rudra Deva war with Krishnapura army. And next Panchasakha. And next Govinda Vidyadhara. And social structure during medieval Odisha. Then Shishupalgarh. तो पार्ट 3 में रही एथि मध्यरु केवल 8 टी क्वेश्चन आंसर लिखिबे। ओके नेक्स्ट चलंतु पार्ट 4 को जीवा। पार्ट 4 रे कोन अछि आंसर ऑल क्वेश्चन विदिन 500 वर्ड्स इच। समस्त क्वेश्चन को 500 टी वर्ड रे लेख होला प्रत्येक क्वेश्चन को। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी ब्रीफली डेस्क्राइब द कॉजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कलिंग वार। और कौन देछि इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ खारवेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी राइट एनी एसे ऑन द वुमेन रूलर ऑफ भौमकर किंगडम। और कौन अच्छे देखो डिस्कस द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपुल अंडर समावंशी रूलर।
नेक्स्ट एक्सेस द अचीवमेंट ऑफ चरगंगदेव। नेक्स्ट और कौन अच्छी ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मेडिवल ओडिशा किंगडम। नेक्स्ट देखंतु डिस्कस द पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली एंड मेडिवल ओडिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु और कौन अच्छी गिवन एन अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल ओडिशा। तो यहाँ थिला 5 नंबर सेमिस्टर राजेंद्र यूनिवर्सिटी में रखु। राजेंद्र यूनिवर्सिटी रे आसी 5 नंबर सेमिस्टर रो हिस्ट्री ऑनर्स रे आसतबा 2023 रो समस्त क्वेश्चन जेना कि डीएससी डीएसई 1 रे थिला। ओके जदि वीडियो भल लागला तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करदे और आपण फ्रेंड्स मान निकट को वीडियो को शेयर करदे से क्वेश्चन सब को पाई पारे। तो धन्यवाद। जय हिंद।